MMDR संशोधन बिल रे ओडिशा भली खनि समृद्ध राज्य एवं एहार लोकों को गुरुत्व देवाकू दाबी करिसेंती बीजेडी सांसद मानस मंगराज। संसद रे ए संपर्कित आलोचना रे भाग नै से कहिसेंती जे ओडिशा देशर एक खनि समृद्ध राज्य। देशर 28% लुहापथर, 24% कोयला, 59% बक्साइट एवं 98% ग्रामाइट उपलब्ध, जोथिपाई पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक बारंबार कोयला रॉयल्टी वृद्धि पाई दाबी करुथिले, किंतु केंद्र सरकार राज्यर एही दाबी को आदौ गुरुत्व देउनाहांती। राज्यर केन्दुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, जाजपुर, अनुगुल परी खनि समृद्ध जिला प्रदूषण रहुथिबारु केंद्र सरकार एही सब जिलार लोकंको उद्वेगर समाधान को गुरुत्व देबा आवश्यक बोली से कहिसेंती। MMDR बिल रे ओडिशा को मिलू गुरुत्व एक कथा को कहिसेंती, दाबी करिसेंती बीजेडी सांसद मानस मंगराज। संसद रे ए संपर्कित आलोचना रे भाग नै कहिसेंती जे ओडिशा देशर एक खनि समृद्ध राज्य। देशर 28% लुहापथर, 24% कोयला, 59% बक्साइट एवं 98% क्रोमाइट उपलब्ध रही, जोथिपाई पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक बारंबार कोयला रॉयल्टी वृद्धि पाई दाबी करथिले। State richly endowed with mineral resources. Nearly 28% of country's iron ore, 24% of coal, 59% of bauxite and 98% of chromite reserves lie beneath the soil of Odisha. Unfortunately, this mineral wealth has over time turned from being a blessing into a curse for the state. The central government and mine leaseholders reap huge benefits from these resources, but Odisha does not receive its due share. Sir, our party leader and former Chief Minister Sri Naveen Patnaik has repeatedly demanded an increase in the state's share of coal royalties, but the central government has paid no heed to this request. As a result, Odisha suffers a massive revenue loss every year. Similarly, although the centre collects 400 rupees per ton as green cess from coal, amounting to 10,000 to 12,000 crore annually, Odisha does not receive even a fraction of this revenue. In this new amendment bill too, there does not appear to be any specific provision safeguarding the interests of Odisha or other mineral-rich states. Sir, the Mines and Minerals Development Regulation Act, first enacted in 1957, has already been amended 4 times. The first major amendment came in 2015, followed by further amendments in 2020, 2021 and 2023. Each time, however, the changes has been designed largely to protect the interests of leaseholders while ignoring the welfare of the states from which the minerals are extracted. Sir, districts such as Keonjhar, Sundargarh, Mayurbhanj, Jajpur and Angul, which are mineral rich, are now facing several environmental degradation and pollution caused by mining activities. The new amendments should have addressed these concerns, but there is little reflection of that. Sir, under the proposed amendment, the contribution of leaseholders to the National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT) has been raised from 2% to 3% royalties. However, this will bring no real benefit to the mineral-bearing states, as the funds will be utilized entirely by the central government, leaving Odisha with no share. Sir, further, by including minor minerals within the scope of this law, state governments will be empowered to impose higher levies on resources like stone, sand and concrete. But this will ultimately make essential construction materials such as sand, stone and gravel more expensive, creating difficulties for the common people. Sir, another provision allows leaseholders to extract benefit from associate minerals beyond the originally specified lease minerals without paying any additional charges. This will benefit the leaseholders but lead to loss
of revenue for the state governments. Moreover, captive mines are now being allowed to sell up to 5% of extracted minerals within 1 year of the lease expiry, which again benefits only the leaseholders. Therefore, instead of making amendments that favor only the central government or private leaseholders, it is important that the government pays attention to the interests of the mineral-rich states like Odisha and above all to the well-being of the people. MMDR बिल रे ओडिशा को किपरि गुरुत्व दिया जिबार आवश्यकता रही से संपर्क में उल्लेख करिसेंती सांसद मानस मंगराज एवं राज्यर अर्थात ओडिशार विभिन्न जिला कथा उठाइछंती जोगुड़िक कि खणी रे भरपूर एवं सेठी प्राकृतिक संपद भरी रही है उल्लेख करिसेंती देशर प्रमुख नदी रे जलाभाव को दूर करने को केंद्र सरकार नदी संजोगीकरण योजना आरंभ करिसेंती देशर विभिन्न नदी को नहीं एभली 30 नदी संजोगीकरण योजना प्रस्तुत होइतिबा बीजेडी सांसद मानस मंगराज एक अणतारका प्रश्नर उत्तर में केंद्र जलशक्ति राष्ट्र मंत्री राजभूषण चौधरी केंद्र जलशक्ति मंत्री मंजूरी प्राप्त नदी संजोगीकरण योजना महानदी को नहीं होइतिबा परिकल्पना परिवेश उपरे प्रभाव एवं राज्य मध्य किभली समन्वय रक्षा करा जाय पारिबो से नहीं बीजेडी सांसद मानस मंगराज प्रश्न करथिले एहार उत्तर में केंद्र जलशक्ति मंत्री कहिसंती जे महानदी बेसिन रे जलाभाव दूर करने को सांकुश तिस्ता गंगा दामोदर सुवर्णरेखा महानदी संजोगीकरण योजना प्रस्तुत होइछि से भली दक्षिण भारत में जलाभाव दूर करने को महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी वैगाई और गुंडर नदी संजोगीकरण योजना प्रस्तुत होइतिबा केंद्र मंत्री सूचना दैछंती महानदी और गोदावरी नदीर बड़का जल को दक्षिण भारत में किछि नदी को नेबाकू 9टी छोट छोट नदी संजोगीकरण प्रकल्प कराजिबो एथिपाई परिवेश उपरे पड़िबाकू थिबा प्रभावर आकलन करा जाउथिबा बेले विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत होउछि एही योजना को कार्यकारी करिबाकू राज्य मध्य समन्वय जरूरी होइतिबारु केंद्र सरकार और जलशक्ति मंत्रालय राज्य मानक सह आलोचना करुछंती नदी संजोगीकरण रे राज्य माने मध्य जेपरि प्रभावित हेबे नाही ताकू मध्य गुरुत्व दिया जाउछि बोली केंद्र मंत्री कहिछंती।